लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में अगर बात चल रही है, वी विल टॉक अबाउट गैस लॉस। तुम लोग अपने फोन से यहाँ पे रखो, फर्स्ट बेंच। ये लोग बिना फोन के ना रह नहीं सकते, यहाँ पे रखो। और लास्ट रो भी अपना फोन यहाँ पे रखो। नहीं तो यहाँ पे देखो एम्प्टी स्पेस है कीबोर्ड के बाजू में, सब लोग अपने फोन से यहाँ पे रखो, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। कमन 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 जल्दी, कमन कमन कमन, डोंट वेस्ट माय टाइम, कमन। थोड़ा पीछे सरको, ये साइड ले लो चेयर। और मैंने पहले भी बोला है, बैगों को जगह नहीं देने का, बैग यहाँ पे रख दो। इंसान से ज्यादा बैग जगह खा है। जस्ट कैरी अ रफ नोटबुक विथ यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सेलफोन यहाँ पे सबमिट करना है टू द लेफ्ट हैंड साइड। बैग वहां पे रख दो, बटन के पास में। कमन कमन, रखो बेटा, कमन। मुझे रिपीट करने नहीं लगाना, कमन। सेलफोन रख दो, देखो यहाँ पे इतना सारा जगह है। बैग वहां पर, बैग वहां पर रखो, ताकि पैरों में जगह हो जाए। यहाँ पे भी रख सकते हो आप, यहाँ पे भी रख सकते हो ये अनुष्का। ये साइड भी बॉयज, जिनको वहां पे नहीं रखते आ रहा है, यहाँ पे रख दो अपना बैग। हाँ, कनिका, पास द फोन्स। कमॉन कमॉन, पीछे के गर्ल्स रह गए अपना फोन। अपने को इतना सारा जगह है। यस, गुड, कीप द फोन देयर। वेरी नाइस। इफ आई फाइंड एनीवन विद द फोन आफ्टर द phones are submitted, I will permanently own that phone. यहाँ पे भी रख सकते हैं, देखो यहाँ पे भी जगह है। सो बिफोर स्टार्टिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, लेट अस डिस्कस अबाउट गैस लॉज। Gas laws. So, the five things which we are going to study in states of matter, first I will list them. Just see whether you guys know. Number one, we are going to study the gas laws. We are going to study the gas laws. Number one. Now, how many laws are there? Gas laws. Four laws. Can anyone tell me the laws? First law is Boyle's law. Second is Charles' law. Charles' law. Third, Avogadro's law. And fourth, Gay-Lussac's law. Nothing is funny. Your marks will be funny. So, Gay-Lussac's law, and फ्रॉम दीज फोर लॉज, ये चार लॉज से हमें मिलता है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। जब हम ये चारों लॉज को यूज करके डिराइव मतलब कंबाइन करते हैं, वी गेट आइडियल गैस इक्वेशन। एंड आइडियल गैस इक्वेशन से वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस which is imaginary because nothing is ideal in this world. Then once we learn ideal gas, we go to the second topic which is in our chapter. It is deviation from ideal behavior. Ideal behavior. Here we come across the term real gas. Deviation from ideal behavior. We get real gas, concept of real gas. And while we are comparing ideal gas and real gas, ideal versus real, we do it on the basis of KTG, kinetic theory of gases. Once this is done, we come across the Van der Waals equation. We come across Van der Waals equation, which is the third part of your chapter. Van der Waals equation. Then
The fourth one is liquids. Fourth one is liquids. Now gases contain 75% of the chapter, 75 to 80%. Last is liquids, and fifth is kinetic theory of liquids. Kinetic theory of liquids. Now, according to the latest Neet syllabus, this part is omitted. Kinetic theory of liquids is omitted, but the remaining upper part, which we have discussed right now, everything is present in the chapter and everything is present in your exam syllabus. So we have to take a look on that. So let us start with gas laws. Gas laws. Tell me, what is Boyle's law? Girls, Boyle's law. Pressure is inversely proportional to volume. At what? What are the at constant temperature and constant amount of substance? The amount of substance and the temperature should be constant. See, बैग यहाँ पे रख दो जिया, बैग यहाँ पे रख. So Boyle's law states that क्या गिरा? What happened? Wonderful. Boyle's law states that pressure is inversely proportional to volume. Pressure is inversely proportional to volume. Don't make a fuss. Please look at the display. Pressure is inversely proportional to volume. And if we write PV is equal to constant, that is also correct. PV is equal to constant and temperature is constant and number of moles is constant. So from here we get this equation. Now, what is the graph? Can anyone tell me the graph? P versus V graph? PV graph कैसे होगा? If I am drawing a graph, PV, thermodynamics graph is like this. PV graph has a curve आता है. Why? Because this is an isothermal process. Temperature is constant ना? So isothermal का ऐसा कर्व आता है and adiabatic का थोड़ा ज्यादा शार्प होता है. ये आपने पढ़ा होगा केटीजी में, नहीं तो मैं आपको बता के रख रहा हूँ. That if I am drawing P versus V graph, it will be a curve. States of matter omitted है according to the latest syllabus. Okay. So which chapter are we doing next? States of matter really omitted है. Question आया था last year. तो ठीक है, चलो कौन सा चैप्टर लेना है बताओ. Thermodynamics. Thermodynamics. Sure. Okay, I will edit the content here. नीचे से वो सर को बुला के लाओ, अपने को वीडियो एडिट करना, हेडिंग एडिट करना, हेडिंग. So until the sir comes, okay, thermodynamics also related to Boyle's law. So we have to do gas laws directly, indirectly. करना तो है gas. So tell me the zeroth law. Zeroth law of thermodynamics. Tell me zeroth law. What is zeroth law? If one body is in thermal equilibrium with another body, and if the second body is in thermal equilibrium with the third body, the first body will be in equilibrium with the third body. If I am in equilibrium with you, and if you are equilibrium with the person next to you, that means that person next to you will be in thermal equilibrium with me. So all of the three will have the same temperature. That is what zeroth law says.
thermal equilibrium is maintained between three bodies which are related to each other. That is zeroth law. What is the first law? इसको बस एडिट करना है. वो जो हेडिंग था ना वीडियो का, उसको एडिट करना. जा कैसे उधर? आप यहाँ से जाइए सर. कवर खाना लग गया पूरा. इसको बस थर्मोडायनेमिक्स कर दीजिए. वो मुझे पता नहीं था इसलिए आपको बुलाना पड़ा. थर्मोडायनेमिक्स कर. HERMODYNDY से DYNAMICS. जी बिल्कुल हो गया. यस 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 हो गया. ओके सर, थैंक यू. जी अपना फोन रखो आगे. अब नहीं रखा है. चलो कम ऑन. रूल्स ऑफ एवरीवन. नहीं वो लग रहा है. देगा तब तो. वो बंद करके रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्या सर? हो गया ना? ये ना हो गया ना सर? देखो जरा यूटीसी के चैनल पे जाके. हाँ ठीक है. मैं अपने हाँ ठीक है जी. हाँ फोन रखो, मैं अपने फोन से देख सकता हूँ. चल रहा है. चलो चलो उन्हें. So thermodynamics. I was asking the zeroth law. Now I am asking about the first law. First law of thermodynamics. Can anyone tell me what is the first law of thermodynamics? बोलो ना. Energy can. It can only be. First law is also known as law of conservation of energy. Law of conservation of energy. So the expression of the law of conservation of energy or the first law is delta E is equal to Q plus W. E is equal to Q plus W. What is E? कौन सी एनर्जी? Internal energy. Internal energy is the total energy of that particular system. Internal energy. What is Q? Charge. Heat. And W is work. Now tell me one thing. Work is positive here. What does that mean? Positive work का meaning क्या होता है? Work is done on the system. If work done is if W is positive, it is done on the system. And if W is negative, by the system. English is a funny language. On and by can change your life. If you see physics में thermodynamics जब बताते हैं ना वो लोग, तो वो E is equal to Q minus W लिखते हैं, क्योंकि वहां पे सिस्टम वर्क करती है. यहाँ पे सिस्टम पर वर्क होता है. तो ऐसा नहीं है. देयर आर मेनी पीपल हु से कि फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स अलग है, केमिस्ट्री का अलग है. बिल्कुल अलग नहीं. वहां पे बस हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है. यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन द सिस्टम. In chemistry, we are focused on the system. In physics, it is by the system. That is why W is negative. If heat Q is positive, G. दिखता है लेकिन भेजते हैं ओके. तब मुझे बताओ, अगर हीट मेरा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? हीट अगर नेगेटिव है, इफ हीट इज नेगेटिव, व्हाट डज दैट मीन? हीट निकाली गई है.